Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akanksha and today we will discuss about India-China border dispute. India-China border dispute can be divided into three sectors: the western sector, the central sector and the eastern sector. The current face-off between India and China was seen in the western sector in the Union Territory of Ladakh. Basically, China has illegally occupied Aksai Chin, which is part of Ladakh, during 1962 war, and the place where they stopped is called as LAC, that is Line of Actual Control. The border dispute between India and China is a recent phenomenon. India has historically shared its border with Tibet. During 19th century, when India was under colonial rule, Britishers were suspicious of Russia's growing influence in the Asian region. So as a part of Great Game, Britishers wanted to protect British India and so maintained a buffer state between India and any other country which can come under the influence of Russia. So, British maintained a buffer state of Tibet between India and China. In 1865, W. H. Johnson, a civil servant with the Survey of India, proposed the Johnson Line, which puts Aksai Chin in Jammu Kashmir region, that is India. But in 1899, British proposed a revised boundary suggested by McCarthy, which puts part of Aksai Chin in Tibet. China neither accepted nor rejected any of the line, and hence Britishers considered Johnson Line and placed Aksai Chin in India. China later annexed Tibet, and in 1952 it illegally occupied Aksai Chin, leading to a war in 1962. As you can see that the LAC is not clearly demarcated. This leads to a lot of face-off. The recent face-off, as you can see, was near LAC at a place called Galwan Valley. Now, the reason for this face-off is that India has started to construct a 255-kilometer long all-weather road running almost parallel to LAC, which is less than 10 kilometers to the west of LAC at Aksai Chin. The road connects Darbuk, Shyok and Daulak Beg Oldi region. The importance of DBO is that it is one of the highest advanced landing ground in the world. To the west of DBO is the Saksham Valley, which is a disputed region between India and Pakistan, but Pakistan has directly ceded this region to China in 1963 under a Sino-Pakistan border agreement opposed by India. तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये स्टैंड अप हुआ क्यों और इसमें क्या हुआ था। ये जो रेड लाइन है ये LAC है। इंडिया PP14 यानी पेट्रोल पॉइंट 14 तक रेगुलरली पेट्रोलिंग करती थी और चाइना सिर्फ ये पॉइंट तक अपना क्लेम करता था। सडनली अभी उसने पूरा गलवान वैली पर क्लेम करना शुरू किया है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया। बट ये जो एक्ट है वो इन वायलेशन है 1993, 1996, 2005 एंड 2012 इंडिया चाइना एग्रीमेंट, जो पीस और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर फोकस करती है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, स्टेटस को नियर द बॉर्डर शुड बी मेंटेन और चाइना का गलवान वैली पर क्लेम करना इज वायलेशन ऑफ स्टेटस को एंड हेंस द वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट। 6 जून को बायलैटरली ये डिसाइड हुआ था कि दोनों आर्मी स्टेटस को मेंटेन करेंगे और पीछे हटेंगे। 15 जून को जब इंडिया यहाँ पे चेक करने गई तो चाइना पीछे जाने के बजाय वो और कंस्ट्रक्शन करने लगा और तभी इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच फेस हुआ और हमारे 20 अफसर शहीद हो गए। इसी तरह लद्दाख में एक और डिस्प्यूटेड रीजन है जो है पैंगोंग त्सो लेक। ये जो खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं ये 3 इडियट्स का एंड जहाँ शूट किया था ये वही लेक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या डिस्प्यूट है ये देखते हैं। ये जो 8 नंबर्स आप देख रहे हैं ये 8 स्लोप्स है और इनको 8 फिंगर्स भी कहा जाता है।
India the easternmost finger, that is the 8th finger तक अपना क्लेम करती है, पर चाइना ने रिसेंटली 4th फिंगर तक अपना क्लेम करना स्टार्ट किया है। और जैसे चाइना का यहाँ बर्ताव है, वैसे यहाँ पे भी जल्दी ही फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। तो ये अक्साई चीन चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, बट ये स्ट्रैटेजिकली चाइना के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तिब्बत और जिंजियांग को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और ये अगर इंडिया के पास होगा तो इंडिया तिब्बत और जिंजियांग के ऊपर नजर रख सकती है, और इसके लिए चाइना को अक्साई चीन किसी भी हालत में चाहिए। अब तो अभी हम देखेंगे कि सेंट्रल सेक्टर जो है ये रिलेटिवली कम डिस्प्यूटेड है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे हाइट पे है और एक एडवांटेजियस पोजीशन पे है, इसलिए चाइना यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करता। और अभी हम देखेंगे वो है ईस्टर्न मोस्ट सेक्टर के डिस्प्यूट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोकलाम इशू के बारे में। ये जो डोकलाम इशू है वो 2 साल पहले काफी सुर्खियों में था। डोकलाम जो प्लेटू है वो भूटान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, बट भूटान ने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इसलिए हम उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए। तो उसका दूसरा रीजन ये भी है कि अगर डोकलाम प्लेटू पे चाइना का डोमिनेंस रहा तो वो जो हमारा चिकन नेक रूट जो है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करता है, वो बैडली अफेक्ट कर सकता है और चाइना का यहाँ पे डोमिनेंस हो सकता है। Which brings me back to another eastern sector dispute, which is Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is the integral part of India, and China doesn't consider this as integral part of India. India accepts McMahon Line as border between India and Tibet, but China do not accept McMahon Line and claims Arunachal Pradesh as part of Tibet, which is now under China. Now, recently, China in 58th meeting of Global Environment Facility Summit said that the Sakting Wildlife Sanctuary, which is in Bhutan, is a disputed region between Bhutan and China. But interesting fact about it is that it shares border with Indian state of Arunachal Pradesh. Now this hints that China is indirectly again claiming Arunachal Pradesh as Chinese territory. China is not only trying to engage India in land dispute, it is also encircling India in Indian Ocean. Now, this encircling strategy of China is called a string of pearls. In this strategy, China has made ports in Titwe region of Myanmar, Hambultuta region in Sri Lanka, and Gwadar in Pakistan. The reason for this is that if war breaks out between India and China, China can encircle India from land as well as water. Now, should India be worried about it? India should definitely take a note of it, but should not be afraid of it. If China is encircling India, India has also started to encircle China. India, since few decades, have maintained a cordial relationship with Chinese neighbor, that is Japan, South Korea, and Indonesia. And if time comes, they will definitely help India. And at the end, I will conclude by saying that peace can be maintained in a country only when it is prepared for war. I hope you got a brief idea about India-China border dispute. See you again with another topic. Till then, study hard and also like, share and subscribe to my channel.